Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss next topic on Indian Evidence Act. Have you ever heard कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया जाता? सुनी सुनाई बातें पे विश्वास नहीं किया जाता. इसी तरह ही जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, देखिए लॉ इज द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. लॉ में आपको वही मिलेगा जो लोगों की कॉन्शियसनेस कहती है. सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया जाता. कारण ये है बातें बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाती हैं और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करता अपने एविडेंस देने में. तो सिमिलरली on this general consciousness of the people, a rule is emerged out in Indian Evidence Act by the name of hearsay evidence. So today we will discuss about the hearsay evidence. As we have already discussed in the previous lectures, in one of my previous lectures, that the admissibility of the evidence. Now let me tell you that there are two types of the evidence. One is oral and the one is in written or documental form. So hearsay evidence is related to oral evidence. The general rule is that as per section 60 of the Indian Evidence Act, the oral evidence must be direct. What it means by the direct? That if it is by the person, it must be by the person who have heard the fact. For example, if a person says that he heard a fact, then it must be evidence of the person who says that he have heard it. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने एविडेंस सुना है, तो ये वही व्यक्ति, वो पर्टिकुलर व्यक्ति कोर्ट में आके एविडेंस देगा कि उसने एविडेंस ये बातें सुनी है. तो उसकी सुनने वाली जो भी उसने सुनी हुई चीज होगी उसके पे ये एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस कहा जाएगा. रूल यही है, जनरल रूल यही है, डायरेक्ट एविडेंस ही एडमिसिबल है. अगर सिमिलरली अगर कोई पर्सन कहता है कि he saw a fact, then in court evidence must be of that person who himself have seen that fact, right? So what is mean to say is evidence must be direct. If it is evidence of the person who says that he has observed this by sense, then that very person should appear in the court for the evidence, right? So rule is that evidence must be direct. जो कहे उसने देखा है वो ही आके कोर्ट में एविडेंस दे. जो जो कहे मैंने ये बात सुनी है, वो अपने सुनी वाली बात का मतलब डायरेक्ट उसने सुना है कुछ, तो वो अपने खुद आकर एविडेंस दे. और जिसको भी लगे कि मैंने अपने सेंसेस, 5 सेंसेस होती है, अपने सेंसेस से कुछ फील किया है, दैट पर्सन मस्ट कम इन द कोर्ट. So I have told you oral evidence must be direct. This is the rule of section 60. Now we are moving towards other. Oral evidence must be direct, I tell you. Otherwise क्या होगा? It will be called hearsay evidence, right? Otherwise it will be called hearsay evidence. And what about the hearsay evidence? It is not admissible in the court. General rule is that hearsay evidence is not admissible in the court. And why this is not admissible? Just a minute. Just a minute. So I was telling you about why the hearsay evidence is not admissible. The reason is that the very person not aware of the fact direct. So he is not aware of the fact directly. Second, his effective cross-examination could not be done.
What it means here, यहाँ क्या मतलब है? क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशन की जाती है कि द पर्सन क्रॉस एग्जामिन, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ही विल अनस्पॉन्टेनियसली फटाफट आंसर देगा। अगर वो सोच रहा है, समझ रहा है, किसी से पूछ रहा है, दैट आंसर्स आर नॉट ऑल स्पॉन्टेनियसली। और यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट एविडेंस है, उसकी नॉलेज से नहीं है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता। This is the other reason why the admissible is not hearsay evidence is not admissible. So next point is he does not feel responsible as he don't know the facts. If it is not in knowledge, it is only hearsay, so he will not responsible while giving the answer to the questions put to him in the cross examination. Next point is there is a chances of exaggeration. आपने अक्सर सुना होगा जी, बात तो बढ़ चढ़ के आगे पहुंचती है। मैंने तो उस लड़की को ये बोला था, और या एवर वट एवर पर्सन को मैंने ये बोला था, और उसने आगे जाके ये बोल दिया। तो देयर चांसेस ऑफ एक्सेगरेशन, बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने के चांसेस। ओके, बट देयर आर some exception also. In some situation, hearsay evidence got admissible, and these exceptions are: number one, res geste. What is res geste? Res geste is given under section 6. Res geste means the fact which become the part of same transaction. These are relevant under section 6 of the Indian Evidence Act. Example, जैसे ये मान लीजिए कि अगर कोई इवेंट हुआ है और मैं एक मिनट पर्टिकुलर एग्जांपल कोट कर देती हूँ। सेक्शन 6 का इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, A is the accused of murder of B by bidding. Whatever is said by A or B or by bystander at the bidding, जिस टाइम पिटाई कर रहा है उस टाइम अगर कुछ भी कहा गया है, और सो शॉर्टली उससे पहले और जस्ट बिफोर अगर कुछ कहा गया है, वो सब पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। मतलब कंटिन्यूटी में आपका जो इवेंट हुआ है उसके साथ साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है, दीज आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो रेस्ट गेस्ट एक्सेप्शन है। अदरवाइज क्या एक्सेप्शन है? एडमिशन एंड कन्फेशन भी एक्सेप्शन है। एडमिशन एंड कन्फेशन को हम डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। Third point is DD. DD is the dying declaration. I have already told you, dying declaration is acceptance of the exception of the uh, rule that hearsay evidence is not admissible. It means dying declaration, although heard by someone, but it is admissible. Okay. Next, statement of entries made in the book of account. These are admissible. These are in section 34 of the Indian Evidence Act, which are maintained as per law, books which are maintained as per law according to law and order, and whatever entry is made in that book, these are admissible. Next point we are going to, it's the opinion of the third person. Yes, opinion of the third person is relevant, is admissible, and it is subject to section 60. Subject to section 60, here you have to see, जैसे कि मैं आपको बताऊं, if you have the Bear Act in your hands, you can open and see the section 60. देखिए, if it refer, it's a 1, 2, 3, 4, and 5. Fifth para is there. If it refers to the opinion, direct evidence की बात कर रहे हैं. If it refers to opinion or the ground on which opinion is held, it must be evident the person who hold that opinion. ठीक है, opinion direct होनी चाहिए, जनरल रूल जो है। अब आ जाइए प्रोविजो को पढ़िए यहाँ पे। प्रोवाइडेड ओपिनियन ऑफ ओपिनियन एक्सपर्ट्स की जो भी ओपिनियन है एक्सप्रेस्ड इन ट्रीटीज, जो ट्रीटीज में दी हुई है, कॉमनली ऑफर फॉर सेल, और वो ऑफर सेल के लिए ओपन है, and grounds on which the opinion are held may be proved by the production of such treaties if the author is dead, cannot be found, or has become incapable of giving the evidence, or cannot be called as a witness without an amount of delay,
or expense which the court regards as unreasonable. So in extraordinary situation में experts के ground जो कि commonly book में mentions हैं, जो कि commonly treatise में mentions हैं, वो बुक्स भी आप दिखा सकते हैं, यानी बुक्स डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट जिसने वो बुक लिखी थी वो अब नहीं है या किसी कारणों से कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसकी उनकी जो लिखी हुई बुक है आप वो भी एविडेंस दे सकते हैं, उसको हियरसे एविडेंस नहीं कहा जाएगा, एडमिसिबल हो जाएंगे मतलब, ठीक है, हियरसे है बट हियरसे के एक्सेप्शन, एडमिसिबिलिटी के एक्सेप्शन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द हियरसे एविडेंस। थैंक यू ऑल। Subscribe and share our channels for the further lecture on Indian evidence. Evidence, evidences. Thank you all.